Yes, yes, yes. Yes, yes, Then we continue. will then we will then we will draw the standard curves, and based on that we will quantify that. Yes, you There are talk about, instruments, sir. There are procedures. yes, yes. You talk about now is fluoride ions. Yes, no. So many Mhm. states in water present of fluoride ions. Yes, Rajasthan, Odisha, in East UP. Yes, yes. Is Yes, the sir. so many problems in human life. So as a scientist, how to remove a fluoride ions from water? Um, Sir, ion filtration method we can use, like WHO and ISW has set the limit of that how many minerals and ions can be in the drinking water purposes. Like there should be some amount of fluoride ion, but if it is like 0.1 ppm, I think 1 ppm, I'm not ever sure about the limit, but if it is less and above it, then it is harmful. But if it's too much, then we have to purify it with the ion selectrometry method, where we basically especially we anion exchanger, with the help of anion exchanger, ion chromatograph, we can remove the fluoride from the water sample. Yes, fluorosis and so many states also present of cadmium, arsenic, mercury in water. Yes, sir. What is the procedure? How to remove? uh, Sir, I am not aware with the cadmium procedure. I am aware with the mercury procedure. First we identify the mercury with the cold vapor technique, and if we find that it is present, then we have to use some complex procedure, complexometric titration. Basic titration not, we will largely try to make the complex of mercury, or maybe we will convert it into ions, Hg2 plus, and then with the help of stannous chloride, we really can remove it from the sample. Reaction with SnCl2 chemically. Yes, good. Next is what is flame test? Do you have any idea about flame test? Yes, sir. Flame test is usually conducted for the alkali metals or alkaline earth metals, where we put the sample in the directly in the flame, and atoms get excited after the energy into the higher state, and when they comes to the lower energy, they show some kind of colors. On the basis of colors, we identify the presence of elements. For example, potassium, it has lilac; barium crimson, for barium crimson red, and other similarly for sodium yellow. We can obtain result for that. Yes, good. How to prepare sodium extract solution in a lab? Sir, sodium fusion extract in the lab. Uh, Sir, we take a small cap. Sir, I have done this experiment in my bachelor's. So basically, we take a small capillary and put the sodium in it along with the compound, and heat it very we heat this capillary very in very high temperature, and dissolve this sodium fusion extract, make this fusion extract in the water. Basically, we try to make sodium fusion extract of those organic compounds, because these are organic compounds cannot be performed in organic reaction, because they are largely driven in the ionic medium. So with the help of sodium infusion extract, we convert ionic compounds into the organic compounds into the ionic compounds. For example, chlorine or sulfur convert into the Na2s or NaCNS, depending upon that. And with the help of ferrous sulfate and other tests can be carried out for the identification of elements, such as for chlorine we can go through the AgNO3. For sulfur we can go through with the potassium ferrocyanide, and sodium sodium, I'm not sorry sir, I'm not able to recall for sulfur. And for other elements we can go with this. Yes, good. In a lab, how to detect elemental analysis? What is elemental analysis? uh, Sir, elemental analysis, are you asking for the acid radicals and basic radicals analysis Yes, that we do? hydrogen, sulfur. Okay, sir.
Yes, yes, sir. So sir, there are the procedure for basic radicals that are largely anions, such as chloride, sulfate, and bromide, extra, and procedure for the group analysis for cations, cation like chlorine, ammonium, aluminium, cadmium, copper. These ions are done through the group analysis. These are basically for cation part. They are basically largely based on the solubility product, where we make proper medium, for example dilute HCl and sodium carbonate. These some kind of group reagents are used to control its solubility, and based on the precipitation and the color from different complexes, we identify particular element based on the group analysis. And for basic radicals, there are individual reactions for them, so we basically characterize them with particular chemical reaction. For example chloride, for chloride there is ammonium nitrate reaction. AgCl got precipitated in white ppt, dissolved in ammonia solution, making the complex of it. And for copper and aluminum, there are procedures accordingly in cationic part. Yes, good. Uh, uh, how to detect functional group in a lab, like carbohydrate, aldehyde ketone, carboxylic acid? Sir, there are particular dedicated protocols, basically procedures for that. For example, carbonyl group, there is a DNP test we carry out, dinitrofenylhydrazine, diphenylhydrazine, and with the help of this, orange color precipitate has been obtained if we carry out reaction with carbonyl compound. For carboxylic acid, we carry out decarboxylation reaction with the calcium hydroxide, and we observe the evolving of CO2, and that convert the lime waters milky. That is the conformation of the carboxylic group. So these are some procedures for them. Yes, good. Basic concept. Let's move on. Any drawback of laboratory experiment and limitation? Sir, limitation, I think sometimes the samples that we receive in the lab from the ground, by the external parameters changing, such as atmosphere, temperature, and other things, the samples got changed during the lab, in coming to the lab. So on ground analysis is limitation for some type of elements. I'm not able to recall the exact name. For example, any sample collected from the icy cold region, and then we get a water sample, let's say, and we want to study the some present bacteria in it in the our lab, where the temperature are something different. So basically this will give altered result. And also the limitation of lab is that any lab cannot have the all kinds of instrumentation facility. Well, it can have, but in our country it is limitation that we have to wait for a different kind of instrumentation for carry out NMR or XRF. We have to make samples and send them and receive the result. So that is limitation, I think, in terms of our country's lab in our country. Yes, good. Because basic point is your clear. Yes, no. Okay, sir. Yes. Basic one is introduction. Yes. हाँ. Say, major point. 2 point is your laboratory questions. Yes, no. So I think I should revise more ना, मुझे मतलब मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है इसको, मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ना. Yes. Second point is lab वाले questions. Yes. Third point is your environment, scientist. So many basic question is clear. Yes, no. Okay, sir. Yes, no. तो 3 point आपके क्लियर हो गए हैं. अब हम अभी तो आपको 6 को है ना आपका इंटरव्यू. हाँ सर. सर 5 तारीख को आई विल बी ट्रेवलिंग, तो सर उस दिन तो मैं कोई मौका नहीं देना चाहता. 5 तारीख को आई के, तो सर कल आई, मेरे पास आज और कल का दिन है बस. यस यस. तो आज तो क्या मुझे थोड़ा काम है. आप कल आपके पास काम है ना फुल. कल सर शाम को मैं मॉक दे सकता हूँ. यस. तो आप 2-3 बजे जैसे भी आपके पास टाइम है तो कंटिन्यू हम 2-3-4 घंटे कंटिन्यू आपका मॉक ले लूंगा. ठीक है ना. ओके सर. है ना. तो अभी जो बाकी का है, अब आप क्या काम कीजिए, जो हमने ट्रांसक्रिप्ट शेयर की थी अपने ग्रुप में, जो ओल्ड स्टूडेंट की हैं या जो वेबसाइट पे अपलोड हो गए हैं, उनको आप थोड़ा कर लीजिए लास्ट 2-3 ईयर की. तो उससे हम क्वेश्चन क्रॉस करेंगे नेक्स्ट डे. जो हम 2-3 मॉक लेंगे कंटिन्यू, उसमें पूरा रिवाइज कर लेंगे वंस अगेन.
पूरा होल केमिस्ट्री और सर ट्रांसपोर्ट। सर मैंने जब लास्ट ईयर क्या कहते हैं वो किया था, मतलब लास्ट ईयर प्रिपरेशन किया था जो इंटरव्यू का, तो मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर मतलब नोट कर लिए थे, उन्हीं को मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ। बट मे भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर होंगे जो मुझे नहीं पता होंगे, मुझे खोजने में आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा अब, क्योंकि सर मैंने कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो नहीं कोई जितने खोज प्रॉब्लम नहीं। पाऊंगा सर जो खोजूंगा। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं पता ना, उनके क्वेश्चन मुझे भेज देना। ठीक है, फिर मैं उनके आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है सर। ना, बाकी आप रिवाइज कर लीजिए जो जो पॉइंट आपको आज नहीं है। जैसे आपने ज्यादातर मोस्टली आंसर दिए हैं, जो फर्स्ट था हमारा, तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो कल हम क्या करेंगे। मतलब मेरा Yes, मतलब मेरा जनरल पार्ट ओके है, बोलने का तरीका सर ठीक है, और yes, लैंग्वेज मेरी समझ में आ रही है सर, जो मैं बोलना yes, चाह yes, रहा हूँ, कन्वे करना चाह yes। रहा हूँ। आपने सब सर मैं चीज कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल भी डालूं अपने हिसाब से, ताकि रियलिस्टिक लगे थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट है जो आपने आंसर नहीं दिए हैं, कुछ चीजें हैं, तो उनको हाँ। थोड़ा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट जैसे साइंटिस्ट का है। मेजर पॉइंट है, व्हाट द हम्म। मेजर वे टू साइंटिस्ट, मेजर वे क्या है, तो उनको थोड़ा और एनालिसिस कीजिए, थोड़ा और उनको सर्च कीजिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की। और पॉल्यूशन पार्ट और कर लेना, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन पार्ट है, जैसे दिल्ली का सबसे मेजर पॉइंट है अभी पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन का पीएम एयर पॉल्यूशन भी है सर, एयर पॉल्यूशन भी है। PM 2.5 है, इंक्रीज। एयर वाटर। यस, पीएम इंक्रीज हो रहा है बहुत ज्यादा 2.5 से। अभी जैसे चल रहा है AQI लगभग दिल्ली में 400, अभी 1000 हो गया था, तो उसको एज ए साइंटिस्ट हाउ टू रिमूव ऑफ दिस वन, व्हाट द प्रोसीजर मेथड इन योर साइड, तो वो अच्छा। चीजें थोड़ा पॉल्यूशन पे वर्क कर लेना आप। उसको हम और डिस्कस करेंगे कल, बहुत अच्छी तरह से। कोई दिक्कत नहीं, कल का आपके पास टाइम है, तो कल हम ज्यादा हम्म। 3 4 5 मिनट जितने भी होंगे ले ओके। लेंगे। ठीक है मतलब सर आप। कोई मेजर फ्लॉ नहीं है, मतलब बेसिक क्लियर है, बस थोड़ा सा ऐड ऑन करना है थोड़ा बहुत ना। यस, थोड़े ऐड है आपका, कोई नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप थोड़ा और हाँ। केमिस्ट्री पार्ट कर लेना, कल हम और अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे लगातार कंटिन्यू। आज मैं कर लेता, लेकिन आज ठीक क्या है। है कि रिलेटिव की यहाँ मेरी शादी है, तो थोड़ा मुझे जाना पड़ रहा अच्छा है। अच्छा, ओके सर। Yes, नहीं yes। ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, कल दो आप क्या बजे से कर सर लेते। 5 बजे तक सर मेरा कॉलेज रहता है क्या सर? अच्छा है। आप तो अभी आपने लीव ली हुई है। नहीं नहीं सर, मैं जॉब ही कर रहा हूँ, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ यस वहाँ यस पे, यस, लेक्चरर हूँ। आप सिलेक्टेड हुए थे तो लास्ट। यस यस। हाँ, लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ था। तो वही सर 10 से 5 कॉलेज रहता है, उसके बाद जो टाइम मिलता है पढ़ाई करते हैं अपनी। यस यस, बढ़िया है, अच्छा है। तो कल हम फिर मिलते हैं, जितने भी हो बता देना, आप मैसेज ड्रॉप कर देना, तो 2 3 बजे से लगातार कंटिन्यू देना, ठीक है। सर कल फोकस करेंगे सर, केमिस्ट्री पे आप फोकस यस करिएगा, यस। क्योंकि जनरल वाला तो आई थिंक मैं कर ले जाऊंगा, केमिस्ट्री यस में 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी हो जाए। यस। ठीक है सर। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट और केमिस्ट्री उस पर वर्क करेंगे कल। हाँ सर, कल ठीक है सर, ओके। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।